Hello everyone and good evening. Welcome to StockEdge Smart Session. StockEdge Smart Session में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you for joining today. So today we will be talking related to the fundamentals related to investment कि आप अपने investment को किस तरीके से better कर सकते हैं with the help of StockEdge. So I have one of our research analyst with me, Shayantina. She is one of my favorite when it comes to related to investment. और मुझे उनकी ideas काफी अच्छी लगती हैं. So let me just quickly say a hi, Shayantina. Thank you for joining this Tuesday. Thank you, Swati, for such kind words. Good evening, all. Yeah, thank you. And like Shantina, we are good to start. So आज आप थोड़ा सा पहले brief कर दीजिए that what are the topic which you're going to cover today? Sure. So पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीमियम एनालिटिक्स सेगमेंट के अंडर में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय एज रिपोर्ट्स, उसके बाद इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर थीम्स, कंपनी फाइलिंग्स. वंस दैट उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर में एसएमई सेगमेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, एज इनसाइट्स, एंड विल रैप बाय अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड्स. दैट इज फ्रॉम माय एंड. Right. Yeah. So you can just proceed further now. Thank you. Okay. So we will first begin with investment ideas. ठीक है. So पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज क्या है. हमारे इन हाउस जो रिसर्च एनालिस्ट है जिसका पार्ट मैं भी हूँ, सो व्हाट वी डू इज वी ऑन सुओ मोटो बेसिस वी कम अप विद स्टॉक्स व्हिच वी थिंक कि ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से वो अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देंगे. ठीक है. एंड ये सिंस इट्स लॉन्ग टर्म तो ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. सो हम लोग वैसे स्टॉक्स को कोलेट करते हैं एंड कोलेट करके उसमें एक थॉरो फंडामेंटल एनालिसिस करके एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं एंड देन ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स व्हिच आई विल एक्सप्लेन थोड़ी देर में वी कम अप विद एज स्कोर. ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द केस स्टडी. तो आप देखेंगे कि पहले एचडीएफसी जैसे बैंक आ रहा है, उसके नीचे एक आइकॉन है जिसका हम लोग कहते हैं केस स्टडी. वंस वी क्लिक ऑन दैट आपको ये एक ऐसा दिखेगा स्पाइडर चार्ट. ना यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सर्टेन पैरामीटर्स है, तो लाइक ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, वैल्यूएशन एंड क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, कीपिंग इन माइंड कि उसका परफॉर्मेंस पहले कैसा, हिस्टोरिकली कैसा रहा, प्रेजेंट में कैसा है, और हम लोग को कैसा लगता है कि फ्यूचर में होगा, वी गिव सर्टेन स्कोर आउट ऑफ 5 टू दीज सेट ऑफ पैरामीटर्स. जैसे आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के इसमें ग्रोथ इज 4, प्रॉफिटेबिलिटी 4, efficiency is also 4, solvency is 4, valuation wise we think it's 3, and quality is perfect 5 out of 5. So the edge meter comes out around to 24 out of the total 30. जब हम लोग इस व्यू रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, सो इस हमें ये टेम्पलेट ये दिखता है, ये रिपोर्ट which is a thorough fundamental report on this particular company. Since it's a banking company, तो इसके जो पैरामीटर्स है कंपेयर टू अदर कंपनीज डिफरेंट होगा. ठीक है. एंड आप देख सकते हैं कि एक एक पैरामीटर्स में हम लोग कैसे स्कोरिंग किए हैं. सारे है. एंड यहाँ पे एक वैल्यूएशन के अंडर में एक की लेवल्स आता है. नाउ द की लेवल्स टॉक अबाउट कि हम लोग वैल्यूएशन के बेसिस पे इसका प्राइसिंग क्या हम लोग को लगता है. ठीक है. सो आप देख सकते हैं द जोन ऑफ 1400 to 1500 would act as a strong base. This is clearly mentioned in the case study. Right. Now I'll go a little bit back. और आपको हम दिखाते हैं कि जैसे हम लोग ये एच स्कोर मीटर में क्लिक करेंगे, I'll just इसको 2 years करते हैं. सो आपको दिखेगा ये ग्रीन बैंड विच इज 1400 to 1500. और ये 1400 1500 कहां से आ रहा है? ये जो केस स्टडी है यहाँ के की लेवल वैल्यूएशन मैट्रिक्स से 1400 to 1500. करेक्ट. तो यहाँ पे टॉप बैंड नहीं दिया हुआ है. वी फील कि दिस पर्टिकुलर जोन जब भी यहाँ आएगा ये एक एक्यूमुलेशन जोन बनेगा. सिंस इट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो जब ये जोन आता है तो आप अपने पोर्टफोलियो में ये
पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड कर सकते हो, करेक्ट। नाउ यहाँ पे ये जो 24 आप देखेंगे सर्कल्स में है, 24 दीज आर नथिंग बट द टोटल स्कोरिंग। और अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आई टेक अनदर एग्जांपल टू शो यू, अगर कोई रेटिंग चेंज भी होता है तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस इज अबाउट द बैंड, बट आई जस्ट शो यू एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का बैंड। आई थिंक उसका टॉप, हाँ दिस इज बेटर। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे टू बैंड्स है, राइट। एक रेड कलर का बैंड है और एक ग्रीन कलर का बैंड है। नाउ रेड कलर का बैंड इज 3000 टू 3100 एंड नीचे वाला इज 2200 टू 2400। नाउ हमें लगता है कि अगर ये कभी भी ये प्राइस पॉइंट इस रेड जोन के पास आए, सो यू कैन कीप अ कॉशियस स्टांस एंड थोड़ा बहुत आप अपने पोर्टफोलियो को लाइटन अप कर सकते हैं। मतलब यू कैन स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट ईदर बाय पार्शियल और आप कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हो। बट सिंस अगेन आई रिपीट कि ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, सो आप कॉशियस होके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो रेटिंग का, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे चेंजेस भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। पहले 21 था, फिर 22 के बाद फिर वी फेल्ट कि ये 23 में अपग्रेड होना चाहिए। सो दिस एंटायर चार्ट शोज कैसे प्राइस मूव किया है एंड व्हाट इज दी जोन्स लाइक, कहाँ आप एंटर करें या कहाँ आप एग्जिट करना चाहें। सो दिस एंटायर चार्ट शोज यू दिस प्राइस मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। आई होप इतना तक क्लियर है। अगर कोई इस रिलेटेड क्वेश्चंस है आप एक बार पूछ लें। ओके, सो आई इफ नो, सर सिंस दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस यू कैन चेक ऑन दी, लाइक आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा चार्ट में से सपोज कि ग्रीन बैंड के पास प्राइस है या नहीं, या रेड बैंड के पास है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट बेट ले सकते हैं। स्पाइडर चार्ट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट कि ये पैरामीटर्स का कितना पॉइंट्स है वो आपको शो करता है। नाउ द की लेवल, नाउ द की लेवल जो हम लोग यहाँ पे ये ग्रीन देखे थे 1500, हियर कम्स द गैप। नाउ व्हाट इज द गैप? सो गैप इज नथिंग कि जो की लेवल है और जो आज का एलटीपी है उसका डिफरेंस है। एज एंड व्हेन जब जितना ये गैप लाइक रिड्यूस होते रहेगा, इन द सेम मैनर सच स्टॉक्स starts to come on the top of that list, of this particular list. Now here it is 1500 and since on the green band, ये green band का zone depict करता है, so it has been shown in green and with the LTP the difference is 0.61. say suppose I'll see अगर कोई red हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आयशा मोटर्स, करेक्ट। आयशा मोटर्स का अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो इट्स ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू दिस रेड जोन, राइट। एंड दैट्स व्हाई अगर हम वापस जाके देखते हैं दैट द that's why it is depicting in red, this 4500 wala, and the last traded price is 4359. So here in Aisha Motors you can keep a cautious stance. So this is what the green and red zone bands talk about. I'll just take a quick check on if there is explain solvency is nothing but it talks about the debt structure of a particular company. It's what is the liquidity like, and then you can also check on the interest coverage metrics, how well the company is suited or placed to meet its financing obligations. So solvency talks about that. So if we go to say Hindustan Unilever, you'll see solvency is 5 because the company is debt free.
So every quarter we update the case studies and वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा under Edge reports which I'll show you in some time and आप social में भी follow कर सकते हो कि कब ये अपडेट हो रहा है, कैसा क्या चेंजेस हुआ है in this particular quarter. So hope investment ideas is clear. If then we'll move forward. I'll again talk about what is the key level. मैं यहाँ पे investment ideas में गई और मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का यहाँ पे देती हूँ. Just a second, I'll just wait a second. At the time of preparing this report, we come up with through by going to the valuation जो हम लोग valuation करते हैं in house and then we come up with the price levels, either the lower price level or the upper price levels and जो यहाँ पे depict रहता है. Now the same things gets translated. Just a sec. Here. So आप देखोगे जो रिपोर्ट में है 2200 will act as a strong accumulation zone. This 2200, 2400, this green zone, and similarly 3000 and 3000 may act as a resistance. The same thing is depicted here. So suppose without even going to the report, you can understand where to enter. I'm so sorry, just a sec. And where to be cautious. These bands depict that. So it is taken from the key levels, the valuation segment of the case study. No, it is not the breakout of any stock. So it doesn't talk about the key levels, doesn't talk about the breakup. It talks about the after doing the valuation, we feel where should be the right accumulation zone and what should be the right resistance zone or the distribution zone. So what to repeat? Can you, if you can elaborate? Chandrasekhar sir, can you just elaborate like what you want me to repeat? Which segment? The entire topic? Okay, I'll just quickly run through it. So I'm repeating once again right from the beginning. So यहाँ पे investment ideas में हम लोग जाएंगे. Investment ideas talk about all the case study companies which we cover. We start the coverage based on suo motu basis. When we feel that this particular company is good for long-term purpose, that can generate return on a long-term purpose, and we collate the same under investment ideas. And these are all done on fundamental analysis. So यहाँ पे उसका case study होता है जहाँ पे आपको thoroughly in-depth analysis मिल जाएगा, right? Post that you can see a spider chart जो talks about which parameter को कितना scoring दिया गया है on to the total of 5 and the total score is 24 in case of HDFC. So just want to point out, for me anything beyond 20 works well, and so depending upon your risk appetite आप accordingly अपना investment bet ले सकते हैं. Now after that, here is the Edge score, and then we see, I'll just take Hindustan Unilever's example, that will be better. So here we see a green zone and a red zone. Now what is this? This green zone, after doing the valuation, we'll feel that this particular zone acts as a support or it acts as an accumulation zone. जब इस level पे prices आए तो it becomes a safer bet for us to accumulate. And the red zone talks about कि जब इस level पे price आए of this particular company, let's be a little cautious and we can start either booking profit partially or however
as per your risk appetite, one can take a stance on the same, right? Okay. Okay, thank you, Chandrasekhar sir. Fine. Now we'll move forward. Now, यहाँ पे we had talked only about one particular report, which is prepared by our research analyst, that is case studies. Now, let's see what are the other reports that are prepared in-house, and उससे हमें कैसे क्या फायदा मिलता है. Now, here अगर आप देखेंगे या all किया हुआ है, so we get to see all the reports that are published by us. But let's focus case study हम लोग already बात कर चुके हैं. Now, let's talk about something called con call. सो व्हाट इज कॉन कॉल. देखिए आप, ये सब क्वार्टरली अपडेट होता रहता है, ठीक है. अब 12th को टीसीएस का कॉन कॉल हुआ एंड यू सी इट इज ऑलरेडी हियर. नो व्हाट इज कॉन कॉल रिपोर्ट्स? इट इज नथिंग. व्हाट आपको पता होगा कि एवरी क्वार्टर द कंपनी, most of the companies, not all, most of the companies interacts with the analyst team, एंड वहां पे लोग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कैसा कंपनी परफॉर्म किया है, उसमें व्हाट आर द चेंजेस, इज देयर एनी गाइडेंस, और इंडस्ट्री कैसे क्या किया है, प्लस द एनालिस्ट टीम आल्सो आस्क क्वेश्चंस. सो वो कब क्या होता है, 1 hour मिनिमम का कॉल टाइम होता है. समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस कि हम लोग पूरा दिन बैठ के वो कॉन कॉल सुने, या जो आपका क्या कहते हैं, जो रिपोर्ट्स भी होता है, ट्रांसक्रिप्ट भी होता है, वो भी 20-21 पेजेस का होता है. सो इट बिकम्स टीडियस फॉर अस टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन. सो व्हाट आवर टीम डज इज, हम लोग कॉन कॉल सुनते हैं एंड उसको द मेजर पॉइंट्स को इस रिपोर्ट में सम अप करते हैं. सो यू सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्निपेट है. So you get to understand how the company has performed in this particular quarter and also on the full year basis. So थोड़ा बहुत उसका business updates, quarterly performance रहता है. Then if we move down, we see segment wise उसका summary किया हुआ है, geography wise deal wins क्या हुए हैं इस particular quarter में, highlights. So सब in a very 15-20 pages in 5 pages with the major points highlighted. So it becomes very easy for us कि हम पढ़ें और फिर accordingly अपना investments place करें. So you don't have to go to 15-20 pages, just simply 5 pages with all the major points under one tab. And ये सब quarterly update होता है. So now once we are done with con call, there is another report which I find is very interesting, that is IPO notes, right? And the latest one which we had covered is Bharti Hexacom. So let's go through the report once and हम लोग देखते हैं. So first अगर आप क्लिक करेंगे तो there is a synopsis about the company. Here हम लोग एक प्रोवाइड करते हैं मेट्रिक कि ओवरऑल जो IPO है वो हमें कैसा लगता है, अच्छा होगा, एवरेज होगा, गुड या एक्सीलेंट, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो मीटर शो करता है. Now once we go to the report, हमें यहाँ पे IPO note में what we get to see is number 1 about the company, उसके financial highlights, issue के details, what is the company into, and the sector it is into. Best part is the competitive landscapes, like the company in parlance with other listed players or other players in the market. So कैसे वो perform किया compared to its peers. फिर promoter का background which is very important for any company, and what are the risk factors. थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे financials उसका show करते हैं, the SWOT of the same and the timeline. So हमें पूरा रिपोर्ट अच्छे से मिल जाता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, what is it into. So you don't have to go and run through all the various news flows and वहां से information देखना पड़े. It is everything done in a very simplified and comprehensive manner under this edge report segment. So I'll just check कोई questions and then I'll
सर रिपोर्ट्स देखने के लिए मैं और एक बार आपको समझा देती हूँ कहाँ से आपको फेच करना है। आप प्रीमियम एनालिटिक्स सेगमेंट में जाएंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट आइडियाज के जस्ट नीचे you'll get a icon which states edge reports। आप उसमें क्लिक करेंगे, आपको यहाँ कैटेगरी ऑफ रिपोर्ट्स आएगा ऑल। यहाँ से आप उसको इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। केस स्टडी हो, कॉनकोर एनालिसिस हो, इन्फोग्राफिक हो, आईपीओ नोट्स हो। स्टॉक्स टू वॉच इज बेसिकली अबाउट लाइक टेक्निकल, सो आई वोंट गो इनटू इट। एंड यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स भी एक अच्छा है। आई जस्ट शो दिस इज पर्टेनिंग टू टेक्निकल्स वन देन टू। अगर हम इसको क्लिक करते हैं वील गेट टू सी कंपनीज विच आर ट्रेडिंग नियर द ब्रेकआउट लेवल्स, what is the key level and what is the current CMT। so this is one again very good feature। फिर यहाँ पे आपको और भी कुछ फंडामेंटल इंफोग्राफिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि top 5 equity mutual fund categories having the maximum inflows in the month of March। so you don't have to go through all those data one place, all the data are collated in a very comprehensive and easy manner, right? so this is what is edge reports is all about। If any questions, please put it in the chat box। So moving forward, अब हम लोग थोड़ा सा कंपनी फाइलिंग्स देखेंगे, right? What is company filings? Okay, before that I'll just see any questions। No, fine। So हम लोग कंपनी फाइलिंग्स देखते हैं क्या है। Now, whenever a company, कोई भी कंपनी हो, उसको अपने एक्सचेंजेस में हर डिटेल्स उसको पब्लिश करना पड़ता है, राइट? दैट इज नोन एज कंपनी फाइलिंग्स। अगर वो एनएससी में, एनएससी बीएससी में लिस्टेड हो तो दोनों एक्सचेंजेस में आएंगे, एंड अगर सिर्फ वन इंडिविजुअल एक्सचेंज पे हो तो उनके इंडिविजुअल एक्सचेंजेस पे आ जाएंगे, राइट? सो व्हाट वी हैव डन इज समटाइम्स इट बिकम्स टीडियस कि हमें पता करने के लिए कि जैसे कि कौन से कंपनीज में बोनस आ रहा है, या कौन से कंपनीज में एनुअल मीटिंग होगा, या कौन कौन सी कंपनी अपनी एक्विजिशन रिलेटेड कोई कुछ कर रहा है या नहीं। सो वो डिफिकल्ट हो जाता है। सो व्हाट वी हैव डन इज हम लोग कंपनी फाइलिंग्स के अंडर में सबको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिए हैं। से सपोज इफ आई एम ओनली वांटिंग टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द बोनस सेगमेंट, आई जस्ट क्लिक ऑन बोनस और मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंपनीज में बोनस रिलेटेड कुछ भी हो रहा है। से न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बोनस का हुआ, से सपोज इफ आई क्लिक ऑन दिस पीडीएफ तो मुझे डायरेक्टली उस एक्सचेंज फाइलिंग में ले जाएगा। सो मुझे एनएससी या बीएससी में अलग से जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ स्टॉकेज में आके कंपनी फाइलिंग्स के अंडर में अगर बोनस रिलेटेड कुछ भी चेक करना चाहूँ तो मुझे इजीली ये पीडीएफ या एक्सचेंज फाइलिंग्स पे will able to get into it and the entire filing यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है? See, so the basic purpose of StockEdge app is to make things simpler, as simple as possible, and so you don't have to go from one place to another। एक प्लेटफॉर्म के अंदर you get everything। नाउ से सपोज वे बोनस दिखा दी, अगर सपोज मुझे जानना है कि बायबैक रिलेटेड कुछ न्यूज है या नहीं, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा जैसे द्वारिकेश शुगर्स में कुछ बायबैक रिलेटेड हुआ है। लेट मी चेक क्या है। आई क्लिक ऑन दिस पीडीएफ एंड मुझे यहाँ पे कुछ ऑफर टू बायबैक अप टू 30 लाख शेयर्स एंड उसका सारा डिटेलिंग्स यहाँ पे डला हुआ है, राइट? ये इसका जो न्यूज़पेपर में रिलीज आता है उसका पूरा डिटेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इफ यू गो टू हियर तो आई थिंक दिस इज अबाउट दी कंपनीज का, वो भी ये सेम दी वंस व्हिच हैज कम इन द न्यूज़पेपर, राइट? सो ये बायबैक का है। नाउ से सपोज अगर मुझे इतना सारा जो फाइलिंग्स है मुझे सब में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड ओनली फ्यू ऑफ देम। जैसे मुझे एक्विजिशन रिलेटेड जानना रहता है एंड एनुअल जनरल मीटिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड सिंस अभी Q4 का मोस्टली रिलीज होगा, उसके बाद मुझे जानना है कि एनुअल रिपोर्ट किस किस में आ गया है।
सो मोमेंट आई एम एडिंग दिस टू द स्टार मार्क, जैसे मैं कर रही हूँ, देखिए ऊपर आ रहा है एनुअल रिपोर्ट एडेड टू माय कंपनी फाइलिंग्स, राइट। सो आप देखेंगे इक्विटीज म्यूचुअल फंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और माई स्टॉकेज। अगर हम माई स्टॉकेज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रीन ब्लू कलर का एक आइकॉन है, अ माइक काइंड ऑफ, एंड वहां पे लिखा हुआ है माई कंपनी फाइलिंग्स। सिंपली क्लिक ऑन दैट और आप देखेंगे सारा कैटेगरीज यहाँ पे लिस्ट हो गया है। आप यहाँ से इजीली कैटेगरीज ऐड भी कर सकते हैं। से सपोज मुझे अपॉइंटमेंट ऑफ चेंज इन की पर्सनल, और ये मेरा यहाँ पे ऐड हो गया, एंड उस रिलेटेड जितने भी फाइलिंग्स है मेरे यहाँ पे सब शो कर देगा, करेक्ट। सो मुझे उतना के थ्रू नहीं जाना है, ओनली द वंस विच आई एम इंटरेस्टेड वो मेरे कंपनी फाइलिंग्स के अंडर में कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। आई जस्ट चेक इफ देयर एनी क्वेश्चंस। रिकॉर्डिंग्स, सर रिकॉर्डिंग्स के लिए आपको स्वाति मैम विल हेल्प यू आउट विद दी सेम। नाउ वी गो बैक टू द इक्विटी सेगमेंट वंस अगेन। नाउ हम लोग ये यहाँ पे हम लोग कंपनी फाइलिंग्स में देखें कि इन जनरल कौन कौन से कैसे हम लोग फाइलिंग्स देख सकते हैं। नाउ से सपोज अगर मुझे जानना है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोई कुछ अपडेट्स आया है कि नहीं, सो हाउ टू चेक दैट। नंबर वन, सो वी व्हाट विल डू इज यहाँ पे सर्च बार में जाके आई टाइप से ब्रिटानिया एंड आई क्लिक ऑन दिस। Excuse me. यहाँ पे अपडेट सेगमेंट में आपको दिखेगा अनाउंसमेंट्स। The moment you click on that, all the exchange filings pertaining to Britannia is put in here। सारे जितने भी है, जैसे चेंज इन मैनेजमेंट हुआ या एक्सक्यूज मी और एनीथिंग, सो आपको सारा मिल जाएगा ऑन डेट वाइज। बट हियर इज देयर इज दिस फनल जहां से आप अगेन सब फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ जानना है कि की मैनेजमेंट में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं, तो मैं ये अपॉइंटमेंट चेंज इन की पर्सनल की, एंड मुझे उसके रिलेटेड जितने भी फाइलिंग्स अभी तक हैं कंपनी ने जो पब्लिश किए हैं इन दी एक्सचेंजेस, वो मुझे फुल सारे डिटेल्स यहाँ से डेट वाइज मिल जाएगा, एंड यू कैन इजिली रिमूव दिस टू, राइट। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द कंपनी फाइलिंग्स। Any questions pertaining to it? Okay, so I'll move forward. So और एक इंटरेस्टिंग एक फीचर है जो मैं बता देना चाहती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, जो शेयर होल्डिंग के बारे में है। सो यहाँ से आप शेयर होल्डिंग में जाएंगे, अगर फाइनेंशियल्स के बाद जो टैब है शेयर होल्डिंग, वहां पे आपको एंटायर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ऑफ द कंपनी मिल जाएगा। एंड इफ यू एक्सपैंड दिस DII, आपको यहाँ से ये भी देखने को मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस, इसका पार्टिसिपेशन कंपनी में कैसा है विद द पिक्टोरियल ग्राफ, so you can study the trend too। Okay, sir, I'm not a perfect person to talk about technical, so technical के लिए आप कोई और डिफरेंट डेट पे ये होता है, सेशन होता है, आप उस दिन फील फ्री टू पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन। Okay, so in the meantime, I'll just ask Swati whether you want to explain about the social platform, or shall I continue? Okay, then I'll continue. Just let me.
Now we will talk about edge insights. Now what is edge insights? आप अगर थोड़ा सा यहाँ देखेंगे नीचे एक edge insight बोल की segment है. Now this talks about, firstly मैं बता दूं, this gets updated every EOD, end of the day ही update होता है. So over the period, over the day, कुछ भी happening हो, be it technical, be it fundamental, हम लोग यहाँ पे छोटा सा snippet करके उसको represent कर देते हैं, so that at the end of the day you can analyze the market और आपको वो technical and fundamentally समझ में आए कि किस कंपनी में क्या हो रहा है. ठीक है. नाउ जैसे यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल रिलेटेड रिलायंस में हुआ है, सो द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट इट विल टेक यू देयर एंड यहाँ से आप वो फाइलिंग को एक्सेस कर सकते हो. एंड वी गेट टू सी दैट 22nd अप्रैल में like the company is likely to announce its results and उसके pertaining what is it all. देन अगर हम जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडियाज के अंडर में न्यू केस स्टडी रिलीज हुआ है ऑफ विप्रो एंड व्हाट इज द स्कोर लाइक एंड व्हाट इज द की लेवल, राइट. एंड इफ वी क्लिक ऑन दैट तो वो हमें विप्रो के केस स्टडी में लेवल्स पे ले जाता है एंड फ्रॉम द एज रिपोर्ट सेगमेंट वी कैन इजीली एक्सेस द केस स्टडी. Hindustan Unilever, it is talking about some technical aspect that RSI is entering the overzone sold zone. So let me see where, and देखिए ये हमें चार्ट पे ले गया एंड यहाँ पे चार्ट पे पैरामीटर्स के साथ, राइट. So this is what Edge Insights is about. Just a second, just see what is the question. Just a sec, can you please? Sure. I'll explain key levels once again. So just I'll cover up the edge insights part and then I'll again explain the key levels part 2. Right. So this is what is all about edge insights. So edge insights talks about EOD, technical fundamental related any happenings in a particular company, which is worth noting so that it becomes beneficial for us to make any investment or trade related calls or say bets. So this is what is about edge insights. I'll just take a few more questions and then. Yeah, it is very much possible to date see which company is recommending dividends. I'll firstly I will show here. Say if talking about a particular company, you go to the update segment and here news announcements and there is a segment called corporate action. So आपको यहाँ पे एक्स डेट कितना डिविडेंड दिया है, व्हाट इज द टोटल परसेंट लाइक एंड उसका रिकॉर्ड डेट का पूरा डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगा अंडर द अपडेट सेगमेंट, राइट. कंपनी फाइलिंग्स आई जस्ट सी हियर. आप डिविडेंड और इंटरेस्ट रिडेम्पशन में टाइप करेंगे इन द सर्च कॉलम, आपको डिविडेंड्स के सारे डिटेलिंग्स डेट वाइज आपको मिल जाएगा. ठीक है राजेश सर, होप दिस इज अंडरस्टूड. फाइन. नाउ वी विल मूव टू द एसएमई जोन. सो एक्सप्लोर बटन के सेगमेंट में वी गेट दिस आइकन कॉल्ड एसएमई जोन. So SME stock zone talks about or lists the SME stocks separately
Now the difference between the SME stocks, and since as the name suggests it's small and medium size enterprises, तो यहाँ इस कंपनीज में लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यूज रहता है, एंड दैट्स व्हाई ये यूजुअली जो है आपका लॉट साइज में ट्रेड होता है. नाउ लॉट साइज और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है. दैट मींस if the higher the price, lower is the lot size, and vice versa. Correct? So here we go to this particular stock, और उसका हम लोग फंडामेंटल्स में रिजल्ट्स, यूजुअली दीज कंपनीज डिक्लेयर द रिजल्ट्स हाफ ईयरली, एंड सो आपको हाफ ईयरली का डेटा मिल जाएगा. एंड इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी इश्यूज है. सो बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट कॉल्स ऑन एनी SME stocks, do feel free to post your queries in the fundamental club, and we'll be happy to guide you regarding कि ये कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. राइट? Right. So this is about the SME zones, and I'll just show like this is, I think, is on NSE. अगर हम लोग NSE में जाते हैं, नेटवर्क पीपल, देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो कर रहा है इन SME. सो इट यू गेट टू नो कि ये कौन से सेगमेंट में है. राइट? आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज के बगल में SM लिखा हुआ है, और अगर आप ये ट्रेड इंफॉर्मेशन सेगमेंट में जाएंगे, आपको यहाँ पे ये लॉट साइज मेंशन रहेगा. राइट? इन दिस केस द लॉट साइज इज 300. ठीक है? I'll just close this. Yes, I showed you how to see the lot size. Again, मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ. आप पर्टिकुलर एक्सचेंज जहां पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, आप वहां जाएंगे, से NSE, एंड यहाँ पे नेटवर्क, एंड ट्रेड इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे लॉट साइज मिल जाएगा. All right. So this is what SME is all about. So then we move to the mutual fund segment. So mutual funds में we have a separate club in the social platform where any query pertaining to mutual funds get addressed. So आपको mutual fund related कोई भी questions हो, तो आप fundamental club in the social platform वहां पे जाके post कर सकते हैं, and those queries get reverted within 24 to 48 hours. Right. सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, द फर्स्ट थिंग अंडर एक्सप्लोर कम्स इज AMCs. सो दिस लिस्ट द नंबर ऑफ AMCs दैट दे आर देयर, एंड उसका टोटल AUM कितना है एज ऑन March 31st March. आपको देखेगा कि सारा डेटा 31st March तक अपडेटेड है, एंड व्हाट इज द AUM साइज, एंड हाउ मेनी स्कीम्स आर देयर अंडर दिस पर्टिकुलर फंड. राइट? सो पहले हम लोग लेंगे SBI म्यूचुअल फंड, देखते हैं. सो मोमेंट वी क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे हम लोग को क्लासेस मिलेगा, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड एंड अदर. सो इक्विटी एज ए नेम सजेस्ट इट्स ओनली इक्विटी. डेट, हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, एंड अदर्स अगर कोई और इन्वेस्टमेंट्स जैसे गोल्ड हो गया एंड अदर. राइट? सो यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए इक्विटी पे ही स्टिक रहते हैं. सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट है हम SBI PSU फंड, यहाँ पे टोटल AUM का साइज है, NAV, एंड अगर हम लोग यहाँ देखते हैं ये NAV का परफॉर्मेंस रिटर्न जो है वो आपको टाइमलाइन वाइज मेंशन्ड है, 1 day, 1 week, a month's time,
3 मंथ 6 मंथ्स में कैसे परफॉर्म किया है, एंड 1 मंथ में 1 ईयर में ये कैसे परफॉर्म किया है. So this is being stated here. Now, once we do the have seen PSU, तो हम लोग यहाँ पे एक now we enter into this PSU, उस पे क्लिक करके. So यहाँ पे NAV का चार्ट है, मूवमेंट का रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसके रिलेटेड कौन कौन से स्कीम्स और भी हैं, परफॉर्मेंस का टाइमलाइन, एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द होल्डिंग. डोमेस्टिक इक्विटी एंड कैश में कितना होल्डिंग है, डोमेस्टिक इक्विटी में कौन कौन से कंपनीज में इसका कितना लाइक होल्डिंग है. So here we see 11% of the total corpus is into State Bank. Then we have Power Grid and कितना quantity of shares है, sectors कौन सा है, सब आपको यहाँ पे in details मिल जाएगा. Now, whenever you invest in any mutual fund, for me it is very important that I check कि which manager या कौन इसको handle कर रहा है, because at the end of the day my money like my hard-earned money is being managed by this particular manager. तो मैं इनका background check थोड़ा बहुत करती हूँ. So we see that this particular fund is being managed by whom, the fund manager's name with the years of experience. And when we get into it, we see कि उनके अंडर में कौन कौन से स्कीम्स हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, विद द टाइमलाइन से 1 डे से लेके 5 years तक हम लोग के पास ये टाइमलाइन है. एंड देन वी कैन मेक आवर जजमेंट ऑन दी सेम. सो दिस इज अबाउट द म्यूचुअल फंड सेगमेंट, जो मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ. यहाँ पे आपके फंड, इफ यू वांट टू चेक इट थ्रू फंड मैनेजर्स के नेम, सो आपको अल्फाबेटिकली यहाँ पे फंड मैनेजर्स के नेम्स भी हैं. सो आप उसके अकॉर्डिंगली भी अपना, से सपोज अगर मैं फर्स्ट वाले का देखती हूँ अभिलाषा, सो उसके अंडर में कौन सा स्कीम है, उसका AUM कितना है, सो आपको सारा डिटेलिंग्स मिल जाएगा, राइट. सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द म्यूचुअल फंड सेगमेंट. I'll see a few questions and then I'll. Okay. राजेश सर, आपको फिर से क्या समझना है, आप प्लीज थोड़ा सा अगर क्लैरिफाई कर देंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल. So in the meantime, I just my bad, I forgot to explain one particular aspect in the premium analytics segment, that is investor portfolio. I'll just check a question and then I'll. Okay, classes. Oh, fine, I'll explain the classes. Classes is nothing. The segregation actually. The equity. This equity means these schemes are only investing into equity. Debt मतलब ये सिर्फ debt में ही invest कर रहे हैं. Hybrid is combination of both. Okay, so I'll go to the equity segment once again and I'll explain investor portfolio, जो मुझसे गलती से थोड़ा बहुत छूट गया था. So investor portfolio में अगर हम लोग जाते हैं, so what is about investor portfolios, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, be it individual और institutional, उनके हम लोग जो होल्डिंग पैटर्न है या होल्डिंग्स को एक जगह कोलेट करते हैं. से सपोज आई वांट टू मुझे जानना है कि आर के दमानी के होल्डिंग्स में क्या है. एंड वी हैव आल्सो सीन कि कभी कभी लोग जब एंट्री एग्जिट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो वहां पे शेयर प्राइस में भी मूवमेंट आता है, राइट. सो यहाँ पे हम लोग बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस के नाम को यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को यहाँ लिस्ट किया है.
So the first one, if we go into it, is C. And here we get into the intro part. We get the estimated holding, the number of companies held. यहाँ पे आपको पूरा सिनॉप्सिस मिल जाएगा, कौन से में हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है, रीसेंट चेंज किस में हुआ है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, और रीसेंट में बल्क में कहाँ पे डीलिंग हुआ है. और द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दी सेक्टर एलोकेशन एंड विद मार्केट कैप वाइज कहाँ पे एलोकेशन ज्यादा है. सो दैट इज लाइक दिस इज वेरी सीन अ पिक्टोरल सेगमेंट में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. अगर मैं देखूं तो डायमंड एंड ज्वेलरी विच इज टॉकिंग अबाउट टाइटन, उसमें सबसे ज्यादा इनका स्टेक है. एंड हियर लार्ज कैप में सबसे ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. थोड़ा बहुत नीचे इंट्रोडक्शन है, बिजनेस व्हाट इज ही इनटू, उसका मेंशन किया हुआ है. सो जस्ट बाय गोइंग थ्रू द फर्स्ट पेज यू गेट अ वेरी गुड आइडिया कि इनका इन्वेस्टमेंट कैसे किया हुआ है एंड व्हाट इज द सेक्टर एलोकेशन और द मार्केट कैप एलोकेशन वेयर ही हैज मेड हिज इन्वेस्टमेंट्स इनटू. नाउ शेयर होल्डिंग में आपको दिखेगा पूरा लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स, पूरा लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखेगा. एंड अगेन की चेंजेस में आपको एकदम लेटेस्ट विच कंपनी में उन लोग ने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया है प्रीवियस होल्डिंग के कंपैरिजन में. जैसे फोर्टिस में हम देखते हैं, अर्लियर इन द लास्ट क्वार्टर इट वाज 4.66% एंड दिस क्वार्टर वो घट के 4.07% पे आ गया है. सो एंटायर चेंजेस डिपिक्टेड हियर. रीसेंट डील्स भी आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा. एंड सेम हियर ऑल्सो अगर हम लोग देखते हैं रिटेलिंग में, जैसे आर के दमानियन एसोसिएट्स का हाईएस्ट शेयर होल्डिंग इज इन एवेन्यू सुपरमार्ट. एंड रीसेंट चेंजेस कहाँ हुआ है, बल्क डील कहाँ हुआ है, सेग्रीगेशन, आप सेक्टर एलोकेशन और मार्केट कैप एलोकेशंस भी यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं. सो अगर आप दूसरे पेजेस में भी नहीं जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा. नंबर ऑफ कंपनीज हेल्ड इज 15 एंड so this what gives you a snapshot of his holdings. Rajesh ji, just no, we don't have that way. What you're talking about date wise, in that sense, when you go to the particular say suppose I'm just showing you, if you go to a particular go to the company filing and go to a particular heading, say suppose if I go to dividend itself, वहां आपको डेट वाइज मिल जाएगा कि कौन से कंपनीज में डेट वाइज इस पर्टिकुलर फाइलिंग को लेके क्या अपडेट्स आया हुआ है. राइट, डेट वाइज नहीं है, यहाँ पे आपको लाइक कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन किया हुआ है अंडर विच डेट वाइज सेग्रीगेशन है. सो एनी मोर क्वेश्चंस regarding any more questions? Oh, okay, so if not, then I'm wrapping today's session. Thank you all for joining, and please feel free to post your any fundamental, technical, or mutual fund related queries in the social platform. Thank you and have a nice day. Bye.